Consciousness, spirituality, the ethics of spirituality, science and spirituality, the future of spirituality. These are our topics in this session. Now, consciousness is a very interesting and a very mysterious phenomenon because when we talk about consciousness, so we are talking about something which is beyond our understanding because consciousness is something which is highly mysterious. I am aware that I am aware. I am conscious that I am conscious. But how do I understand that I am conscious? And what makes me conscious? Like my this hand, when I touch my face, so does this hand make me conscious? Or my eyes make me conscious? Or my brain, my neurons make me conscious? And the lack of consciousness is one of the biggest problem of the world. When a person is sleeping and when a person has some psychological problem, or a person is drugged, intoxicated, some smoking or alcohol, and you become unconscious, you lose control of your mind, and then you say anything which other people may consider something bad, or when you become mad or crazy or abnormal, and when you become abnormal, so that is the important thing. And for that you have to see that how you become conscious of the fact. So in this regard, you have to see that how life works with the consciousness. How life works with the consciousness. Biggest problem of the world is the lack of consciousness. Some people, they are sleeping or they are dead, or they have some drugs or narcotics, so they lose consciousness. But many people, they are awake, they are aware, they are alive, but they are not conscious. Like many students, they know that I have to study to become successful, but they don't become aware or awake or responsible or consistent because something happens to them and they remain lazy and they procrastinate things. So that is one of the important point that we have to explore, that why it happens. Now, what is consciousness and how consciousness works? These are two different things. The nature of consciousness is that how consciousness works. Is it the brain? There are some cells in the brain which tell us that be aware, be awake. And why we have to tell people repeatedly, do this, do this, do this, and still they don't understand. And the other thing is that how we can become more conscious, how we become more aware, how can we become more awake. So for that, then we have science, we have psychology, we have philosophy, we have spirituality. People use religion also. A religion is for to make you conscious that you will die, and that there will be hell, and there will be paradise, and there will be heavens, and you will be punished and you will be rewarded. And in the Holy Quran and Bible, repeatedly there are points so that to make you aware, to make you conscious repeatedly. For example, Muslims, they call for the prayer 5 times a day. Is it necessary? Why not just you should know that this is the time of prayer and go and offer the prayers? Why call on loudspeaker and again and repeating the same words? So this whole system, like TV, radio, media, everything, newspapers, all this is to police, publicity, marketing.
All this is regarding your consciousness. What I am teaching you now, why you should be here. You can just Google consciousness, or you can listen to a lecture on consciousness in YouTube. Why you are here? So this is another reason that you want to become conscious of your responsibilities and of your duties. Uh, Spirituality is connected to consciousness because when you are spiritual, so you are spirited, you are emotionally strong. Spirituality makes you a loving person, a caring person, a carefree person. No stress, no anxiety. You become relaxed and you enjoy your life when you are spiritual. So such people, they become smart. Their brain start works. And because they are nice people, they are good people, they are ethical people. Spirituality is also related to ethics. A spiritual person must be ethical, must be moral, must be responsible. A spiritual person cannot kill people, cannot kill his or her own time, cannot become the enemy of his own self or the self of others. Science wants to understand the universe, and spirituality is also connected to universe. And science wants to reach to the truth, and spirituality also wants to reach to the truth. Both are paths, but goal is the same. Now, science tells us about consciousness, and science tells us psychology is the science which tells us that how our brain works, how our central nervous system works. So all this is related to the to this point of consciousness. What is the future of spirituality, which is one of the topic that I have mentioned above, and I have given you the notes also. The future of spirituality is that the future of religion is in darkness. People are no more religious, especially in developed countries, in Europe and United States and Japan and developed countries. People are no more religious. Only in developing countries, in poor countries, in backward areas, people are more religious. Even within a country, in the villages, people are more religious, while in the cities, people are less religious. So, what the people should do if they are not religious? Science, okay, philosophy, also all right. Material things, business, money, luxuries, but still you feel you want to be connected to the universe. You want to be connected to the nature, but you do not want to be a religious person because religion has lost its attraction in 21st century, and only Islam is there. All other religions are going down. Even Israel is a constitutionally a secular country. One fifth of Israel population that is Arab Muslims, and most of the leaders of Israel, they are not religious. It is only some people extremist that who are Jews, and they are practicing Judaism. Christianity has almost lost its impact. In England, now Christianity is not the dominant religion. Christianity, they do not want to, people don't want to identify themselves as Christians. And because even Christianity is a very easy religion, you don't have to do nothing. Just on Sunday, go and sit in church, and that's all. It's not like Islam that you have to go for 5 prayers and fasting and zakat and hajj. And all these things are not there in the Christianity. But still, people they are not interested in the religion. But you have to fill the void. You have to fill the space, and that space comes then from spirituality. So there is a very bright future of spirituality. People like Sadhguru and Osho and Carl Jung and all these people are so popular now in the young generation because people are tired of, fed up from religion, sects and wars and one sect and another sect and these clergy and pundits and molvis and mullahs and all these people are tired now.
So what they should do, what they will do. So the only choice that they have, that is spirituality. In a personal capacity, the foreign minister of USA called himself Jew. That is his personal identification. And he worked there as a state representative also. And sometimes people use religion for politics. People in Pakistan also, people use religion for politics. They are not religious people, but they use religion for the public attention. As at that time Israel was thinking that we are in a bad situation, and Hamas attacked us, so the state and don't call him foreign minister. There is no foreign minister of USA. State secretary, they call it state secretary. There is no name of foreign minister in United States. The ministers are not there in United States. Whenever you write, so write professionally. The designation of foreign minister does not exist in United States of America. They call it secretary of state. अच्छा, तो आज का टॉपिक ये है कि भाई जो कॉन्शियसनेस है, ये शऊर जो है, कॉन्शियसनेस जो है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल मसला है। इसका हल करना जो है बड़ा मुश्किल है। नंबर वन ये है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है। और I wrote on evolution theory in Philosophy for Life movement. Evolution theory is a science. If you don't agree with it, so that is your problem. But evolution theory by Darwin, it is a science. It is a scientific fact. It is not just a theory. It is a scientific fact which has been proved by science. If a person doesn't agree with it, like Galileo, the church asked him that don't say that earth is revolving around the sun, say that sun is revolving around the so Galileo said that I will say, okay, no problem, I will say that the earth is stationary, the earth is standing, the earth is not moving, but my saying will save my life, but it will not stop the earth from revolution and रोटेशन। गलीलियो को भी इसी तरह पकड़ा गया था और उसको कहा कि तुम कहो कि ये ज़मीन साकिन है, क्योंकि मज़हब में ज़मीन साकिन है। तो वो जब डर गया तो उसने कहा यार मैं कहूँगा कि ज़मीन साकिन है, लेकिन मेरे कहने से ज़मीन रुकेगी नहीं, इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है वो जारी रहेगा। तो उस टाइम ने आपको बचा लिया, गरीब क्या करता। तो बनो का प्रोफेसर जो है वो अपने आप को बचाएगा, लेकिन एवोल्यूशन थियरी जो है वो उसके मौलवियों की वजह से वो झूठी नहीं हो सकती। Actually, in Pakistan, the culture is that people want to have shortcuts. लोगों को शॉर्टकट चाहिए। सर जी जरा नोट्स दे दो ना, मैं CSS जल्दी जल्दी कैसे करूं। तो लोग CSS भी जल्दी करना चाहते हैं, आसमान पे भी जल्दी चढ़ना चाहते हैं। तो मौलवी उसको शॉर्टकट बताता है बस। फिर मौलवी में सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाक करता है, लतीफ़े सुनाता है, हूर और जन्नत के बागों की बातें करता है। एक अच्छा एंटरटेनर है, टाइम भी देता है, एनर्जेटिक भी है। हमारे जो सईद अहमद साहब है, वो पता नहीं कितने महीनों से मेरा स्टूडेंट है, लेकिन मैंने उसको एक दफ़ा भी सेफ टू में लाइव नहीं देखा, डरता है। मतलब आप उसकी सेव फेसबुक देखो ना, उसमें कोई भी मुझे कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन मौलवी जो है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर वक्त ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो उसके मुकाबले में जो प्रोफेसर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, थिंकर्स है, वो लोग है ही नहीं। वो उनका तो कोई बात ही नहीं है। मेरे स्टूडेंट है वो नहीं लिखते ना बोलते हैं, डरते लोग क्या कहेंगे। मौलवी जो है वो डरता नहीं है। तबलीगियों को देखो, बिल्कुल इतने डायनामिक लोग हैं, इतने तेज़ है। 4 महीने के लिए, एक साल के लिए जाते हैं, अपना पैसे लगाते हैं, 3 महीने, 3 दिन, 40 दिन
रेवण में इतना बड़ा उनका इज्तिमा होता है, नईम खान अगर कहे कि जी मैं लाहौर आ रहा हूँ आ जाऊँ, तो 3 लोग भी नहीं आएंगे। लेकिन तबलीगी कहते हैं तो करोड़ों लोग आते हैं। सो दे आर पॉपुलर। क्यों? वो एक्टिव है, डायनामिक है। जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं वो डरते हैं, वो ऐसा से कम तरीके शिकार है, वो बोलते ही नहीं है, न बोल सकते। सईद अहमद को तुम इधर से पकड़ो कि जाओ सेफ टू में बोलो, नहीं बोलेगा, डरता है। मौलवी नहीं डरता, वो कॉन्फिडेंट है, मेहनत करता है, अपने काम से मुखलिस है। बाकी लोग मुखलिस नहीं है, 2 नंबर है। हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल है, कम्युनिस्ट टाइप लोग हैं, फ्री थिंकर्स है, वो भी 2 नंबर है। वो ये समझते कि जी सिगरेट पियो, लड़कियों के साथ इश्क लड़ाओ और जी शराब पियो तो बस तुम लिबरल बन गए। Judaism is following Talmud and Torah, the Old Testament. Basically, they think that they are the real followers of the Prophet Abraham and the Prophet Moses. And the Old Testament, Taurat, not the New Testament. New Testament is for Christians, Old Testament is for Jews. And they think that they are the selected people of God. Even the Holy Quran also says that they are the selected people and they are important people. So they have a kind of self-confidence that we are very chosen people and we are very great people. तो हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस ये है कि हम कैसे कॉन्शियस होंगे और हम कॉन्शियस कैसे है, मतलब हम क्यों अवेक है, हमें क्यों समझ आ रही है इन चीज़ों की। तो चूंकि ये सब्जेक्टिव है, ये हमारे जहन है, हमारा जहन हमें चीज़ें समझाता है। तो फिर हम जहन को कहता है कि हमें ये कहो कि तुम मुझे कैसे समझाते हो। तो जहन कहता है यार मैं तो तुम्हें समझाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता कि मैं तुम्हें कैसे समझाता हूं। मसलन आप मुझे कहते हैं कि जो है ना, मुझे सर आप मुझे समझाए कि ये आप कैसे टीचिंग करते हैं। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार मैं तुम्हें टीचिंग कर रहा हूँ, इससे सीखो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं टीचिंग कैसे कर रहा हूं, मतलब अब मेरे मुंह से अल्फाज कैसे निकल रहे हैं, ये अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे अल्फाज में, मेरे मुंह में ये अल्फाज कहाँ से आ रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस का ये मसला है कि हम नहीं समझ सकते कि हम कैसे समझते हैं। इसी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो जारी है, फिलासफी में, साइकोलॉजी में, साइंस में, न्यूरो साइंस में, कि इंसान का ये ब्रेन जो है ये कैसे काम करता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। ये राज है, ये अभी तक इस पे किसी ने कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन या कोई इंपॉर्टेंट थियरी जो है वो नहीं दी है। 2-3 थियरी है। मसलन ग्लोबल ये थियरी है कि भाई आपका जो है ये ब्रेन के अंदर कोई नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, तो वो आपको कॉन्शियसनेस देता है। लेकिन उसका भी कोई ख़ास प्रैक्टिकल प्रूफ जो है वो हमारे पास नहीं है। तो ये जो मज़हब है, स्पिरिचुअलिटी है, साइंस है, कानून है, पुलिस है, ये सब कुछ आपको कॉन्शियस बनाने के चक्कर में है कि तुम कॉन्शियस हो जाओ, तुम ड्यूटीफुल हो जाओ, तुम क्रिमिनल मत हो, तुम जुर्म मत करो, तुम स्टूडेंट हो अपनी स्टडी करो, गलत काम मत करो। तो ये सब कुछ अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तुम गोल्ड बन जाते हो, सोना बन जाते हो, तो फिर तुम्हारे मुंह से या तुम्हारे हाथों से कोई गलत काम होता नहीं है। ठीक है, ये जो पैगंबर होते हैं या ये जो बड़ी बड़ी वली होते हैं या फिलासफर होते हैं, सुकरात, अफलातून टाइप लोग होते हैं, तो ये लोग कौन है? ये कॉन्शियस लोग होते हैं। उनको पता होता है कि मेरी हर बात का और मेरे हर फेल का क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या इसका नतीजा होगा, मैंने क्या करना है, मैंने किस वक्त क्या बोलना है। तो वो फिर वक्त के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मॉरल होते हैं, फिर वो गड़बड़ नहीं करते। इंसान क्यों गलती करता है, इंसान क्यों कत्ल करता है, हमास और इसराइल का क्यों जंग है? ये लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। हम सारे जो है LPCS में कल रात को मैंने एक मेडिटेशन शेयर किया था कि हम सारे एक है। अब एक बंदा बाई चांस कोई यहूदी पैदा हुआ है, कोई
मुसलमान है, यही यहूदी जो इज़राइल में है, ये अगर पाकिस्तान में पैदा होता तो मुसलमान होता। अब वो बाई चांस यहूदी है तो तुम उसके साथ क्यों नफरत करते हो? क्या वो इंसान नहीं है? और यही यहूदी फिर मुसलमान के साथ, अरबी के साथ क्यों नफरत करता है? क्या वो इंसान नहीं है? तो ये चीज़ें जो है, दिस इज़ द स्पिरिचुअलिटी जब आती है तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। I speak 8-9 languages, and the most difficult, or if I think so, that was Spanish, because Spanish has 18 tenses, and Spanish verbs change with every pronoun and with every male and female. So with every singular and plural. अब इंग्लिश में तो सिर्फ दो चेंजेस है ना, ही गोज और आई गो, सिर्फ गो है और गोज है। स्पेनिश में हर प्रोनाउन के साथ वो वर्ब चेंज हो जाता है। बॉय, बामोस, बान, तो वो मुकम्मल चेंज हो जाता है। हर वर्ब हर प्रोनाउन के साथ चेंज हो जाता है, और 18 उसमें टेंसेज है, और सब्जेक्टिव केस बहुत स्ट्रांग है उसमें। सब्जेक्टिव केस, इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस नहीं है, बहुत कम है। तो ये जो चीज़ें है, स्पेनिश काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, बट आई लव इट बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज आफ्टर अरबिक एंड पर्शियन that I learned Spanish. No, Pashtuns are never Bani Israel. Pashtuns are Aryans, or Aryans are Pashtuns. Nosotros hablamos en español porque es un idioma que entendemos, y para eso tengo muchos amigos que también tienen cumpleaños, y por eso yo le mandé mucho feliz cumpleaños, y ellos me agradecieron porque el agradecimiento es una cosa buenísima y muy bonita. So this was Spanish. All the best guys. Now let's go to IR. ये जो कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी के नोट्स है, इसको ज़रूर पढ़े प्लीज़, रीड इट, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा काम करना शुरू करे।